Hello there, all genius minds. I'm back with your EVIS class, your learning buddy Prajita here with the Environmental Studies Class 4 by Knowledge Series Amit Publishing House. So children, let's start a new chapter today. Are you all ready? Okay, here we start with chapter number 10 and the chapter is Shelters of Animals. Shelter क्या होता है? Animals जहाँ रहते हैं, जहाँ हम लोग रहते हैं वो हमारा शेल्टर होता है. The place where the animals live. तो वो शेल्टर कौन कौन से हैं? क्या है वो शेल्टर्स एनिमल्स के? Let's read in this chapter here. Animals are found everywhere. They live on land and in water or near the seashore. हर जगह animals रहते हैं, land पे भी रहते हैं, water में भी हैं और seashore पे भी. Animals too need shelter to protect themselves. अब shelter क्यों चाहिए होता है? हमें घर क्यों चाहिए रहने के लिए? अपने आप को सेफ रखने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, वेदर कंडीशन से प्रोटेक्ट करने के लिए, एनिमल से प्रोटेक्ट करने के लिए, हर चीज से प्रोटेक्शन के लिए वी नीड शेल्टर. इन द सेम वे द एनिमल्स आल्सो नीड shelter to protect themselves. Different animals live in different types of shelters. अब हर एनिमल का शेल्टर जो है वो अलग है. Let us read about the shelters of some animals. Nests of birds. अब बर्ड कहाँ रहती है? नेस्ट में रहती है. हम सबको पता है कि बर्ड्स नेस्ट में रहती हैं. Other than human beings, birds are the biggest group of animals that make shelters for themselves. We human beings तो है ही. हम तो बनाते ही हैं बहुत सारे शेल्टर्स अपने रहने के लिए, घर बनाते हैं. लेकिन उससे नेक्स्ट टू ह्यूमन बीइंग, बर्ड्स आर द बिगेस्ट ग्रुप ऑफ एनिमल्स जो कि अपने लिए शेल्टर बनाते हैं. मोस्ट बर्ड्स बिल्ड नेस्ट टू लिव इन. दे ले देयर एग्स एंड टेक केयर ऑफ द यंग बर्ड्स इन द नेस्ट. अब ये क्या करती हैं? बर्ड्स नेस्ट बनाती हैं और उसमें अपने एग्स भी ले करती हैं और फिर अपने यंग वंस की देखभाल भी करती हैं. The nests are usually built at high and hidden places like trees and holes in walls. और ये जो नेस्ट बनाती है ना, ये बहुत ऊंची जगह पे या किसी हिडन प्लेस पे, छुपी हुई जगह पे बनाती है. जैसे कि ट्रीज पे, ऊंची जगह पे ट्रीज, ऊंचे ट्रीज पे, या इस वॉल्स में जो होल्स होते हैं वहां पे वो हिडन प्लेस होता है ना. बर्ड्स बिल्ड नेस्ट वेयर दे आर सेफ फ्रॉम देयर एनिमीज एंड द वेदर. जहां उनके लिए वेदर से भी प्रोटेक्शन होता है और एनिमीज से भी प्रोटेक्शन होता है, वहां पे वो अपने नेस्ट बनाते हैं. बर्ड्स यूज अ नंबर ऑफ मटेरियल्स लाइक ग्रास, लीव्स, twigs and feathers to build nests that are soft and warm. अब नेस्ट बनाने के लिए क्या क्या चीजें यूज करती है? ग्रास, लीव्स, पत्ते लाती है, ट्विग्स लाती है एंड फेदर्स भी, जिससे कि उनका जो नेस्ट है वो सॉफ्ट रहे यंग वंस के लिए और गर्म भी. Some examples of nest. Now see different types of nests. The penguin simply collects a few pebbles and stones to make a nest on the ground. See, the penguin, वो क्या करती है? penguin तो bird है ना, वो छोटे छोटे पत्थर इकट्ठे करती है और इससे एक nest बनाती है ground. The woodpecker pecks a tree trunk with its beak to make a hole. To make it cozy, it fills the hole with chips of wood. अभी जो वुडपेकर है, आपने भी प्रीवियस लेसन में बर्ड्स और उनके बीक के बारे में पढ़ा, तो वहां पढ़ा कि वुडपेकर क्या करता है? पैक करता है वुड को, ट्री के वुड को पैक करता है और वहां पे एक होल बनाता है और उस होल में वो क्या इकट्ठे करता है? वो जो चिप्स ऑफ वुड होते हैं उसी से वहां पे उसको कोजी बनाने के लिए, वार्म बनाने के लिए उन चिप्स ऑफ वुड को डालता है. The weaver bird makes a nest with twigs and grass. See how beautiful this nest is. The nest hangs upside down from the branches of trees. अब ट्री की ब्रांच से ये नेस्ट जो है वो हैंग करता है. And
The bird enters it through an opening at the bottom of the nest. और नेस्ट के ये उल्टा लटका होता है नेस्ट ट्री की ब्रांच से, और नीचे की साइड से होल होता है जहां से वो बर्ड एंटर करती है उस नेस्ट. See how beautiful it is. And this is made by the weaver bird. इसको बोलते ही weaver bird है, weave करती है अपना nest. The tailor bird uses its beak like a needle to sew 2 or 3 leaves together with a blade of grass. The nest is made soft and warm by lining it with fine grass. Now this tailor bird, as the name says, tailor, वो sew करती है एक किससे, अपनी बीक को नीडल के, जैसे नीडल से स्यू करते हैं ना, हम सिलते हैं नीडल से, वैसे ही अपना बीक यूज करती है स्यू करने के लिए. जोड़ती है किससे, एक ब्लेड ऑफ ग्रास, एक ग्रास लेती है उससे वो सिलती है 2-3 लीव्स को एक साथ, और उस नेस्ट को सॉफ्ट और वार्म बनाने के लिए कुछ फाइन ग्रास उसके अंदर रखती है. A swan makes a nest on the ground. इसलिए ground पे swan अपना nest बनाते हैं. A weaver bird makes an unusual nest. Weaver bird. And then a penguin makes a nest with stones. Okay? अब ये weaver bird का सबसे सुंदर nest होता है, एक unusual सा nest बनता है. Shelter of insects. अब insects का shelter क्या है? Some insects like honeybees, ants and termites live in well-organized groups and build shelters. ये जो honeybees होते हैं मधुमक्खियाँ, और ants होती हैं, termites होती हैं दीमक और ants, ये सब एक well-organized group में रहती हैं और अपना shelter भी बनाते हैं. Honeybees live in beehives, मधुमक्खी का छत्ता होता है. Ants and termites build large mounds of soil. Soil बहुत ऊंचा ऊंचा टीला बनाते हैं soil का. With many tunnels to live in. बहुत सारे tunnels होते हैं उसके अंदर रहने के. Ants, bees and wasps are social animals as they live in large group called colonies. अब ये जो ants हैं, bees हैं या wasp हैं, ये social animal भी. क्यों कहा गया इनको social animal? Because they live in groups, और large groups, बड़े बड़े groups में, जिसको कि colonies कहा जाता है. A spider's web. अब ये स्पाइडर अपना वेब कैसे बनाता है? A spider spins a web with a type of silk which is formed in its body. स्पाइडर की बॉडी में ही एक तरह का सिल्क फॉर्म होता है, उससे ये अपना वेब वीव करता है, वेब बनाता है. The silk comes out as a liquid. एक लिक्विड के फॉर्म में सिल्क बाहर आता है इसकी बॉडी से. It becomes solid when it comes in contact with the air. और जब ये एयर के साथ कांटेक्ट में आता है, ये लिक्विड जो है वो सॉलिड फॉर्म कर जाता है. The web has blobs of glue to trap insects. इस वेब में ग्लू होता है, चिपचिपा एक पदार्थ होता है, जिससे कि जो भी कोई इंसेक्ट आता है वो चिपक जाता है. A spider can easily get caught in its own web. एक स्पाइडर अपने ही वेब में फंस जाता है. So it simply avoids the sticky blobs. वो sticky blobs वो avoid करता है अपने वेब में लगाना. The silk thread spun by the spider is very strong. Scientists are trying to produce a similar type of thread artificially. अब इसका ये जो silk thread होता है ना, जिससे कि ये अपना वेब बनाता है, ये बहुत strong होता है. It's very strong. और जो साइंटिस्ट हैं वो भी कोशिश कर रहे हैं कि इसी टाइप का आर्टिफिशियल एक थ्रेड बनाया जाए, जैसा कि ये स्पाइडर के पास है, जैसे कि स्पाइडर बनाता है अपने सिल्क थ्रेड्स. शेल्टर ऑफ लैंड एनिमल्स. अब लैंड एनिमल्स का शेल्टर क्या होता है? एनिमल्स व्हिच लिव ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल एनिमल्स. Terrestrial animals are the animals which live on land. Those which live in jungles live in natural shelter. और जो जंगल में रहते हैं उनका नेचुरल शेल्टर होता है. नेचुरल शेल्टर जो भी मिलता है उनको उसमें रहते हैं. Now wild animals. Animals like lions, tigers and bears live in caves. ये सब गुफा में रहते हैं. Lion, tigers, they live in, and bears. Elephants and deer live under trees. Deer और elephant ये लोग पेड़ के नीचे रहते हैं. Rabbits and mongoose
dig burrows. ये burrows dig करते हैं, जमीन खोद खोद के ये rabbit और mongoose वहाँ रहते हैं. Moles live in underground tunnels where they can find worms to eat. जो moles हैं वो underground tunnels में रहते हैं, वहाँ उनको insects भी मिलते, worms भी मिलते हैं खाने के. Snakes live in holes made by others. अब snake अपने आप कुछ नहीं बनाता है, दूसरों के holes में जाके घुस के रहता है. They even live in abundant ant hills. बहुत सारे ant hills ऐसे होते हैं जिसमें ants नहीं रहते हैं, वो बनाती है फिर वहां से कहीं और चले जाते हैं, तो बहुत सारे snakes वहां भी रहते हैं. Chimpanzees live on trees as well as on the ground. जो chimpanzees हैं वो trees पे भी रहते हैं और ground पे भी रहते हैं. Monkeys and baboons live on trees and swing from one branch to another. Monkeys और baboons जो हैं वो trees पे रहते हैं और एक branch से दूसरी branch पे ये swing करते हैं. Animals which live on trees are called arboreal animals. So children, animals which live on land are known as terrestrial animals, and the animals which live on trees are known as arboreal animals. Next, find out where the following animals live. Now, this is your task to find out, children. आप इसको find out करेंगे कि ये animals कहाँ रहते हैं. Kangaroo, giraffe, koala bear, wolf, shark, squirrel. Fine? Just find out and find. Now, termites and ants live in ant hills. जैसे आपको बताया था कि बहुत सारा ऊंचा एक ढेर बनाते हैं सॉइल का और उसमें रहते हैं ants और termites. These are made of hard mud. Inside the ant hill are special rooms to store food. बहुत सारे rooms बने होते हैं ant hill के अंदर जिसमें कि वो खाना store करते हैं. There are rooms for the baby ants also. The different rooms are connected by tunnels. Tunnels से एक दूसरे से room से connected हैं. Worker ants build the rooms and tunnels. They repair the ant hill when it is damaged. Like the bees. Bees में worker bees जो होती हैं वो बनाती हैं beehive. तो यहाँ पे जो rooms हैं, ये जो ant hill है, ये worker ants बनाते हैं. Domestic animals. What are the domestic animals? Domestic animals live in man-made shelters. घर पे रहते हैं. These shelters protect the animals from heat, cold, rain, and wild animals. इन सब चीजों से protection मिलता है. Horses are kept in stable. Sheep and goats are kept in farms. A pig lives in a sty. Cows and buffaloes live in sheds. Dogs and cats are kept as pet at home. जो एनिमल्स डोमेस्टिक होते हैं उनको घरों में रखा जाता है, घरों से बाहर वहाँ पे शेल्टर बनाया जाता है इन लोगों का, और जिनको घर के अंदर रखते हैं वो पेट एनिमल्स होते हैं लाइक डॉग्स एंड कैट्स. नाउ शेल्टर ऑफ वाटर एनिमल्स. अब इन वाटर एनिमल्स का क्या शेल्टर? देयर आर मेनी क्रिएचर्स दैट लिव इन वाटर. सम ऑफ दीज क्रिएचर्स आर फिश, crabs, lobsters and turtles. Fish breathe in oxygen from water. अब fishes कहाँ से ऑक्सीजन लेती हैं? वाटर से, through the gills. Gills उनके lungs नहीं होते, gills से ऑक्सीजन लेते हैं. Some fish live in corals. Some live between underwater plants and some under rocky areas. See, animals living in water. Some fish कहाँ रहती है? वो corals में रहती हैं. कुछ रहती है बिटवीन अंडर वाटर प्लांट्स, अंडर वाटर जो प्लांट्स होते हैं उसके अंदर रहती हैं, और कुछ रॉकी एरियाज में. वाटर बर्ड्स मेक रफ क्रूड नेस्ट विद ट्विग्स नियर वाटर. अब वाटर बर्ड्स जो होते हैं वो क्रूड नेस्ट बनाते हैं, किससे? ट्विग्स जो होते हैं वाटर में जो मिलते हैं. दीज बर्ड्स हैव वाटरप्रूफ फेदर्स प्रोटेक्ट देयर बॉडीज. वो गीले नहीं होते, उनके वाटरप्रूफ फेदर्स होते हैं. Crabs and lobsters live in their own shells. Crabs और lobster जो होते हैं उनके अपने shell होते हैं, hard shell होता है, उसी के अंदर रहते हैं. The hermit crab lives in shells discarded by other animals. और ये जो hermit crab है ना, ये दूसरे animals
जो डिस्कार्ड कर देते हैं, अपने शेल्स छोड़ देते हैं, उन शेल्स में ये हर्मिट क्रैब रहते हैं। राइट, सो मेनी स्ट्रेंज थिंग्स टू लर्न। यस ना, बहुत सारी स्ट्रेंज चीजें हमें पढ़ने को मिलती हैं, देखने को मिलती हैं। एम्फीबियंस, animals that live both on land and water are called amphibians. Frogs, toads, and newts are a few examples of amphibians. They use their lungs to breathe while they are in water and their skin while they are on land. अब जैसे कि एम्फीबियंस दोनों लैंड पे भी रहते हैं और वाटर में भी रहते हैं, तो जब ये लैंड पे रहते हैं तब ये किससे ब्रीथ करते हैं? अपने स्किन से ब्रीथ करते हैं। जब ये वाटर में रहते हैं तब ये अपने लंग्स से ब्रीथ करते हैं। Alligators and crocodiles are reptiles. Since they breathe through their nostrils, they keep their heads above the water while swimming. ये जो alligators और crocodiles हैं, ये reptiles हैं और ये ब्रीथ कहाँ से करते हैं? अपने नॉस्ट्रल से करते हैं। तो ये अपना हेड पानी से ऊपर रखते हैं जिससे कि ब्रीथ करते हैं। They either lay eggs near the seashore or in a hole on the land. अब ये अपने एग्स कहाँ ले करते हैं? या तो सी शोर पे करते हैं या लैंड में कोई होल होता है उसमें देते हैं अपने एग्स। ओके, नाउ लुक हियर चिल्ड्रन, a frog, this is a frog, this is a newt and this is a crocodile. Okay, the animals that live on the seashore, अब जो सी शोर पे रहते हैं एनिमल्स, सी वर्म्स, सी क्यूकम्बर, रिवर clams and crabs live on the seashore. A sea cucumber, this is a sea cucumber, a crab, this is a crab on the seashore. A low tide, we can see thousands of crabs coming out of their holes and appear above the sand. When there is a low tide, at low tide, क्या होता है? Thousands of crabs ये होल्स में से बाहर आते दिखते हैं, appear above the sand, sand के ऊपर आ जाते हैं, रेत के ऊपर आ जाते हैं। Nocturnal animals. What are nocturnal animals? Animals that are active at night are called nocturnal animals. जो कि रात को एक्टिव होते हैं, दिन में नहीं दिखते हैं, उन्हें कहते हैं nocturnal animals. They can see very well in the dark. उन्हें रात को बहुत अच्छे से दिखाई देता है। Hamsters and guinea pigs are nocturnal in habit. They stay in their burrows during the day. Day में तो वो अपने burrows के अंदर रहते हैं and रात को वो निकलते हैं। Hamsters and guinea pigs. Owls and bats do come out at night. Yes, owls भी रात को बाहर आते हैं और bats भी रात को बाहर आते हैं, जंगल में। Earthworms live under the ground. Earthworms कहाँ रहते हैं? Ground के नीचे। They come out to the surface at night to eat. वो रात को बाहर आते हैं surface पे खाने के लिए। Moths do come out at night to feed. So these are the nocturnal animals which come out at night. So children, this was all in this chapter. कितना कुछ था पढ़ने के लिए, जानने के लिए। You must have learned many new things too in this chapter. Now test yourself. How does a fish breathe in oxygen? The fish breathes in oxygen from the water through its gills. Gills होती हैं, उससे वो breathe करती है oxygen. What are amphibians? The amphibians are the animals which live both on land and in water. Now take the correct option. Which of these do we find near our homes? Spiders, birds, ants, all of these. हमारे घर के आसपास घर में क्या ये सब दिखते हैं? Spiders भी दिखते हैं, birds भी दिखते हैं, ants भी दिखते हैं. So all of these. Which of these is an amphibian? Tiger, dog, frog, all of these. Amphibians live both on land and in water. So frog is an amphibian. Honeybees live in beehives, mounds of soil, nests, water. Honeybees live in beehives. Okay? Moving further, an animal that lives in abundant ant hills is
जो abundant ant hills होते हैं जहाँ पे ants नहीं रहते हैं, ant hill बना हुआ होता है, उसमें कौन सा animal आके रहता है? Snake, bat, squirrel, fish. Snake. Snake lives in an abundant ant hill too. So take here snake. The bird that builds its nest in a tree trunk is woodpecker, tailor bird, parrot, none of these. Tree trunk के अंदर कौन बनाता है अपना nest? Woodpecker. Fine children, now name two animals of each type. We have read about all these animals. Aquatic animals we पढ़े, amphibians we पढ़े, terrestrial we पढ़े. Then we had gone through those domestic animals and nocturnal animals also. So we have to write two names of each type of animal. So aquatic animals, those who live in water, fish and crabs are the aquatic animals. Then terrestrial animals, those who live on land are terrestrial animals, monkey and rabbit. Then amphibians are the animals which live both on land and water, frog and crocodile. Then domestic animals which are kept by the man, cow and horse. Nocturnal animals are those which come out at night. So hamster, guinea pig, then owl is also there, bats are also there. So children, now we move further. Now children, arboreal. Arboreals are the animals which live on the trees. Chimpanzee and baboons. And the reptiles, snake and earthworm. Okay. Now, write T for true and F for false. Animals that live on land are called terrestrial animals. Yes, this is true. Different animals live in different types of shelters. Yes, सबके shelters एक जैसे नहीं होते हैं, अलग-अलग होते हैं. This is true. Ants, wasps and bees are social animals. Yes, they are social animals because they live in groups, in large groups. This is true. Sheep and goats are kept in farms. Yes, they are kept in farms. True. Nocturnal animals can see very well in the dark. Yes, this is also true. And earthworm lives on the ground. No, it lives under the ground. So this is false. F. Answer the following questions. Why do birds build nests? Birds build their nest to lay eggs and to keep their young ones, look after their young ones in the nest. What materials do birds use to make their nests? The birds use leaves, twigs. So they use leaves, twigs, then grass, etc. to build their nests. Describe the nest of a weaver bird and a tailor bird. A weaver bird builds its nest. It's a very unusual one. It builds its nest from the branch of the tree upside down, and there is an opening under the nest from which the bird goes inside. And a tailor bird, it uses its beak as a needle and takes a blade of grass to sew 2-3 leaves together and makes the nest and keeps the nest cozy with some twigs and grass inside it. Describe an ant hill. Ant hill is made up of hard mud and it is very high also. It has different rooms inside it which is connected with the tunnels, and this all is done by the worker ant. What purpose does a spider's web serve? The spider makes its web to catch hold of its prey. How do amphibians breathe? How do amphibians breathe, children? They breathe when amphibians are the animals which live on land and in water. So when they are on the land,
they breathe with the help of their skin, and when they are in the water, they breathe with the help of their lungs. So the last one is, how do frogs, toads, and newts breathe? As they all three are amphibians, so they breathe with their skin when they are on the land, and when they are in the water, they breathe with their lungs. So now we come to the activity. Why are most desert animals nocturnal? The desert animals are nocturnal because in the daytime the sun becomes so warm they don't come out, and at the night it is cool and calm there, and then they come out for the search of their prey, for the search of the food. Visit a zoo or a bird sanctuary and share your experience with the class. आप मे बी आप में से कुछ बच्चे गए भी होंगे बर्ड सैंक्चुरी, देखा भी होगा, जू भी विजिट किया होगा. इफ नॉट, जस्ट हैव अ विजिट देयर एंड देन शेयर योर एक्सपीरियंस कि आपने क्या क्या देखा वहाँ पे, किस किस तरह के बर्ड्स थे, कैसे एनिमल्स थे, कैसे बर्ड्स थे वहाँ, एंड व्हाट वर द स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दोज एनिमल्स एंड बर्ड्स थे. Paste pictures of terrestrial animals, amphibians and nocturnal animals. Write 2 lines about each. अभी आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स क्या होते हैं, नॉक्टर्नल कौन से होते हैं, और एम्फीबियंस क्या होते हैं. So just paste their pictures or write 2 lines about each of them. Collect pictures of animals along with their shelters. Write in brief about each. अब कुछ एनिमल्स के पिक्चर्स कलेक्ट कीजिए, उसके साथ उसके उनके शेल्टर्स जहाँ जहाँ वो रहते हैं, एंड उनके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में यू हैव टू राइट इट डाउन. सो बिकॉज आप लिख सकते हैं ये चीज़ें क्योंकि अब आप पढ़ चुके हैं. नाउ यू नो मेनी थिंग्स अबाउट द एनिमल्स एंड देयर शेल्टर्स. सो चिल्ड्रन, आई होप you had a great time with me in this chapter, because many new things to be learned and many new things you have come to know, you have come across many new things also. So please go through the chapter again, read it very nicely, thoroughly, and you will enjoy it more. So here I end the chapter. Stay excited for the clamp of another video. I'll be back with a new chapter for you. Till then, stay blessed, have a good time. Bye.